Asaduddin Owaisi. Question number 342, Madam. Yes, Honourable Minister. First question, please. Madam Speaker, with the emergence of newer and wide-ranging forms of media, whether electronic, social, there is a greater need than ever to ensure that the news and information which flows to the receiver is unbiased and fair in all aspects. Madam, the part one of my first supplementary is, does the Honourable Minister agrees with me that the Cable Television Network Regulation Act 1995, which regulates the operation of cable television networks, it came into force and there are some lacuna exist in these codes. And the lacuna pertains to a very important thing, that it doesn't give guidelines on issues like paid news, unfair reporting, vendetta reporting. I would like to ask the Honourable Minister whether his ministry or the government has any plans to review these codes, including specific provisions on paid news and other unethical practices. Part two of my first supplementary, Madam, in the answer which is given to the August House, he talks about broadcast. Part two, Madam. Part two. You asked one question. Of the first supplementary, Madam. Yes, you asked first question. You asked it? No, I just want to ask the Honourable Minister that as far as the statutory independent regulator or the Broadcasting Services Regulation Bill, whether the government has any plans to include a statutory mechanism to look into violations of advertising and program codes by channels, including news channels, and whether they will set up an independent regulator for looking into such complaints, especially in the light of the recent confrontation between Industrial House and ZTV. Whether are you going, the sting operation was done, extortion had happened, money was demanded. So I am of the opinion that it is very important to have a statutory independent regulator. Does the Minister agree with me? Madam Speaker, the Honourable Member has raised certain very important issues. But before I set out to answer the Part A and Part B of his first supplementary, may I, with your permission, put this issue in a certain perspective. When we talk about regulating content, essentially what is it that we are referring to? We are referring to policing the remit which Article 19 of the Constitution lays down. Article 19 has given the fundamental right of freedom of speech and expression to every individual. 19(2) caveats that right and allows the government to impose certain reasonable restrictions. Some parts of that caveat are very easy to administer, but there are certain parts of that caveat where there is an element of subjectivity which does emerge. And that is why the Parliament in its wisdom, when it enacted the Cable Television and Networks Act 1995, incorporated in the rules an advertisement code and a content code. Over a period of time from 1995 till 2012, various efforts have been made in order to refine and update that code. The Broadcasting Bill of 1997, after that the Convergence Bill of 2001, and it did not see the light of the day. In 2004, when the UPA government was formed, a committee was set up under the Secretary, the then Secretary, Mrs. Asha Swarup, to see as to how the content and advertising code could be updated. The committee deliberated for 3 years, and in October 2008, it submitted a very comprehensive report. After that, consultations were held with stakeholders, but unfortunately, there was no consensus which emerged. But government did not let up. After that, a task force was constituted, and between 2009 and 2010, that task force also held a series of meetings with the stakeholders. Now, what emerged as a process of this consultation was that the first two tiers of the recommendations with regard to the self-regulatory structure has been accepted by the stakeholders,
And both in the news and the non-news sector, you have self-regulatory mechanisms which have been set up. Insofar as the question of paid news is concerned, which the Honourable Member specifically referred to, now there are wide-ranging consultations which are taking place. The Press Council of India is also involved in those consultations. The Election Commission also has its own view. So the Ministry continues to remain engaged with this issue, and we will try and see as to how, the content code or the advertising code, if required, can be suitably amended to see that we can incorporate these aberrations also. Insofar as the second part of the question is concerned, Madam Speaker, with regard to whether there is a need for an independent regulator, while जवाब ही तो दे रहा हूं, सबर करो, सुन तो लो, उन्होंने दो सवाल पूछे हैं. Madam Speaker, insofar as the independent regulator is concerned, I share the concern of the Honourable Member, but I must confess that there is no consensus with regard to an independent regulator among the various stakeholders. They have accepted the first two recommendations of the Asha Swaroop Committee. Self-regulatory structures have been set up, but insofar as statutory regulation is concerned, whether through a Broadcast Regulatory Authority of India or an appellate structure, unfortunately, we have not been able to find a common ground with the various stakeholders. Madam Speaker, I would, with your permission, like to quote what Justice Kajju has said in relation to the Honourable Minister's reply on self-regulation. He said self-regulation is no regulation, and news organizations are private bodies whose activities have a large influence on the public, and they must also be answerable to the public. The answer which you have given to us, Honourable Minister, now let me ask you very clearly, do you condone or do you condemn with what happened between Honourable Member Naveen Jindal and Zee News case? You talked about NBA. You talked about NBA has formed Broadcasting Standard Authority. In the light of this controversy, does the Minister agrees with me that whether he is satisfied with the government checks and balances placed on the Broadcasting Authority through self-regulation guidelines, given that these voluntary authorities do not have much powers with them? You talk about Press Council and everything. Does he agree with the Press Council of India in 2010, Honourable Minister, has presented a report, Madam, on paid news. They made various recommendations, including creation of a single entity to regulate the print as well as electronic media and make paid news a punishable malpractice. What is your opinion on this? Whether your government is considering the option of creating a single independent media council that will become the single designated authority to maintain and improve the standard of newspaper, so that these malpractices, unethical practices, including paid extortion, comes down. Yesterday in Gujarat, Election Commission has said 126 cases of paid news have happened. That Election Commission take care. I would specifically ask you, Mr. Honourable Minister, what is your opinion on self-regulation in the light of Naveen Jindal and Zee News case, IBN's fake sting on teachers, and also the 2010 Press Council, which they themselves have said that there is a need to establish a single independent media council? Madam Speaker, the Honourable, with your permission, may I reply to him? The Honourable Member has asked us. He can not go on record. What do you say? What do you please address? What are you doing? Honourable Minister, no, don't get into this argument. Madam Speaker, my apologies, Madam Speaker. Madam Speaker, the Honourable Member has asked a series of supplementary questions which are contained in the overarching framework of his second supplementary. Let me deal with them one by one. Insofar as the alleged episode or incident between a private industrial house and a private broadcaster is concerned, I entirely share his concern. It is something which is extremely disturbing, but
as we speak, there is a criminal investigation process which is playing itself out. A criminal investigation process should be allowed to reach its logical culmination. I do not think it is fair on part of the government to possibly second-guess the manner in which it unfolds. However, having said that, I think it would be my duty to inform the House that when a complaint was received in the Information and Broadcasting Ministry, we referred it to the News Broadcasters Standards Authority, which is headed by a former Chief Justice of the Supreme Court of India. They, in their wisdom, must have applied their mind. To the best of my information, they've got back to the ministry saying that the matter is sub judice. But notwithstanding what the NBSA has done, we have a concurrent mechanism called the Interministerial Committee. That Interministerial Committee has deferred to the self-regulatory mechanism over the last 2 years because it is our belief and conviction that you require to give institutions time in order to flourish, in order to find root. But where we find that there is an aberration which has taken place, which does warrant our intervention, we have never hesitated to intervene in the past. And as we speak, there is a meeting of the Interministerial Committee tomorrow, and I'm sure that the Interministerial Committee, in its wisdom, will apply itself to it. Insofar as the other parts of your question are concerned, with regard to paid news, I've already said that it is something which troubles us as much as it troubles you. But we remain engaged with the Election Commission of India, with the Press Council of India, to try and find a common ground, which can then be translated into a legal formulation, which then can be successfully administered. Because the challenge as all of us understand in this, is to find and determine that what constitutes or qualifies as paid news. So therefore, once we've answered that fundamental question and put a legal formulation onto it, I think the rest of the process will become easy. Srimati Vijaya Chakravarti. Advertisement code has not been strictly followed. So that's why the signal abnormality is very, very visible in the case of defined program. So my pointed question is this: whether the government has got any regulatory process which is strictly implemented in the case of the parties who are violating all the codes. And my second question is this: whether the minister has... Everybody is asking so many questions. It is a part. Non-second question is a part. Whether the minister has got any specific information regarding the data of a blackmailing to the minister or defined concern. Yes. Good, very good. With your permission, may I inform the August House that the Cable Television Network Rules 1995 contain a specific provision called Rule 7, which deals with the advertising code. Now, any violation of the advertising code is in the first instance dealt by the Advertising Standards Council of India called ASCI. Now, ASCI is an overarching body of the entire advertising sector, and they, in their wisdom, if they suo motu detect a violation of the code, or if the ministry detects a violation, or if a specific complaint comes to us, we make a reference to them, and then they accordingly, in consonance with their own code, which is not in conflict with the government's code, do take certain actions in terms of asking the advertisement to be taken off the air, or if it is in the print, not to be repeated. But if the government finds that the action is inadequate, then as I earlier mentioned, that under Section 20 of the Cable Television Networks and Regulation Act, we have an interministerial committee, and that interministerial committee then steps in and takes whatever action it deems to be appropriate. Yes, we have been extremely cautious and circumspect when it comes to government's intervention, because as I earlier pointed out, and I would most humbly like to submit, that when you are dealing with content, you are actually trying to regulate the mandate of Article 19 of the Constitution, and eventually, whatever you do or you do not do has to stand the test of the court. So therefore, that is why we, in our wisdom, thought that in the first instance, allow the self-regulatory mechanisms to take root.
because if there is a peer review, that peer review would be the best way of doing it. But if there is an aberration, then government does step in. Thank you. चौधरी लाल सिंह। मैडम, मैं मंत्री साहब से जस्ट जानना चाहूंगा, मैडम ये मंत्री साहब बताएं, आज सारे हाउस को 14 लोकसभा का पता है कि जब 10 MP यहां से निकाले थे, इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया था, तो हमारी पार्लियामेंट में एक झटके से उनको बाहर निकाल दिया, सारा कैरियर बर्बाद कर दिया। तो ये जो ऑपरेशन नवीन के साथ इन्होंने किया है, इनके साथ, अब मैं जानना चाहता हूं, ये क्यों नहीं यहां से इनका लाइसेंस कैंसिल होता? क्या तकलीफ क्या है, क्या परेशानी है कि इतनी बड़ी बेइंसाफी और शर्म लूटपाट मची है? मैडम, जो मीडिया का हाल है, ये लोग, सुनिए मैडम, ये लोग डरते होंगे, हमें किसी से डर नहीं है। ये जो हालत की है मीडिया ने लोगों की, जो चैनल जो हाल करते हैं, जो देखो केबलों का हाल, रात को गंदी पिक्चरें और गंदे काम और गंदे धंधे और इतनी लूटपाट मची है। अगर आप इस पे नकेल नहीं लगाओगे मंत्री साहब, आपको मैं कहना चाहता हूं, तो आपका कोई फायदा नहीं मंत्री बनने में। इसको कैंसिल करो। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद। मैडम स्पीकर, मैं जो माननीय सदस्य के ख्याल है, ठीक है, क्या हुआ सोच लीजिए, बोलने को दीजिए, ये क्या बात है? माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य के ख्याल है, बोलने दीजिए, आप लोग जो खड़े हो गए, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। हाँ, आप बोलिए। जो माननीय सदस्य के ख्याल हैं, मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूं। जो उन्होंने संवेदनशीलता जताई है, वो बिल्कुल सही है, उससे कोई व्यक्ति मुकर नहीं सकता। पर जहां तक कार्रवाई का सवाल है, माननीय अध्यक्षा जी, एक फौजदारी की कार्रवाई चल रही है, एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इस समय चल रही है। सरकार का ये उत्तरदायित्व बनता है, सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि जब अपने अख्तियारों का वो इस्तेमाल करे, उसको इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए कि अगर उसको किसी भी कसौटी पर कसा जाए, वो खरा निकले। और मैंने पहले जब माननीय सदस्य ने ये सवाल पूछा था, उसका जवाब देते हुए कहा था कि हमारे मंत्रालय में, हमारी सरकार में एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है। कल वो उस इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की बैठक है और हम ये मानते हैं कि वो इस मामले को अपने संज्ञान में लेंगे और अपने विवेक के अनुसार जो भी उचित लगेगा किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए ठीक रहेगा इस समय पर, चाहे जितनी उत्तेजना इस मामले पे हो, कि दैट आई ट्राई एंड सेकंड गेस एन इन्वेस्टिगेशन और ट्राई एंड सेकंड गेस अ डिसीजन इन एनी मैटर। Sit down. What are you doing? What are you doing? श्री शरद यादव। जब ये इस सवाल में कई चीजें चारों तरफ से उठाई गई, मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं कि इस देश में हर एक, इस सदन से लेकर ब्यूरोक्रेसी से लेकर प्रधानमंत्री तक को लोकपाल में डाला जा रहा। ये क्या बात है? मनीष तिवारी जी, जिस तरह से एक फंसा हुआ आदमी एक चारों तरफ की मजबूरी में खड़ा हुआ आदमी, अकेले यही नहीं बाकी और लोग भी इसी हालत में खड़े रहे। ये जो मीडिया है, चाहे प्रिंट हो चाहे विजुअल हो, बहुत अच्छा काम भी बहुत सा करते हैं, लेकिन अच्छे और बुरे की पहचान तो अकाउंटेबिलिटी के बगैर नहीं हो सकती। ये अकाउंटेबिलिटी ये कौन सी चीज है? ये कौन लोग? मैं आपसे अध्यक्ष जी निवेदन करूंगा कि आजादी बनी रही तो ये आजादी खत्म होगी इस देश की, ये आजादी चल नहीं सकेगी। ये फ्रीडम जो है, हम लोग तो कई तरह की, हम लोग तो इस तरह के टारगेट बनते रहते दिन भर, इनमें कोई पूछने वाला नहीं। नीरा राडिया ने कितने लोगों को एक्सपोज किया? कौन कौन बड़े बड़े लोग जैसे खन्ने खा बैठ करके पूछ रहे थे, सबका नंगा कर दिया उस महिला ने। अब वो अच्छा किया बुरा किया वो छोड़ी, बहस में नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रेस काउंसिल ने कई बार कहा
ये ऐसा बंदर या ऐसा क्यों जानवर रखे हुए जिसके पास कोई दांत और कुछ नहीं है, क्यों इसको रखे हुए? और उसको दो, अधिकार दो। और अच्छा और बुरा तो यहां भी हो रहा, अच्छा और बुरा तो देश भर में हो रहा। लेकिन ये जो मीडिया है, ये जो बगैर जंगल के टाइगर छोड़ दिया आपने, चारों तरफ जब घूम रहा है, इसके ऊपर मैं एनडीए की सरकार में प्रधानमंत्री जी से, आडवाणी जी से, सबसे कहते रहा। ये मैंने मनमोहन सिंह जी से कहा, ये क्या तमाशा है? यानी पुलिस और राजनीतिक आदमियों का तो इकबाल ही खत्म कर दिया इन्हें दिन भर। और दिखा रहे क्या? वो क्रिकेट ऐसी चलती कि हार गए या जीत गए, दिन भर चल रही है। आपका जो है वो सिनेमा वाले, यानी हिंदुस्तान की आजादी से लेकर सब लोग जिंदगी दे दिए, उनका कुछ नहीं दिखा रहे हैं। ये मरे हुए या जो भी अच्छे कलाकार थे, बुरे कलाकार थे, दिन भर उनकी मोहब्बत दिखा रहे हैं, कहीं कुछ दिखा रहे हैं, कहीं कुछ दिखा रहे हैं। अजीब बात है भाई, यानी अजीब हालत है। और हाँ, क्रिकेट तो यानी हार गए तो और जीत गए तो वो सब खबर में बनी हुई है, कोई खेल है। मैं आपसे माध्यम से मनीष जी से कहना चाहता हूं, बगैर जोखम के दुनिया नहीं चलती। जोखम उठाइए और जोखम उठाइए। और ये लोग कह रहे हैं कि एक तरफा 1,83,000 लाख का वो हुआ, करोड़ में लूट हो गई। ये छोटी सी बात से उसको आप अलग नहीं कर सकते, चाहे वो लाल सिंह जी हो चाहे कोई हो। ये इतना बड़ा स्कैम जो है, वो छोटी सी चीज में आप जो करना चाहो करो, लेकिन ये पूरा का पूरा मामला जो स्कैम है, इस सदन में लोग बैठे हैं, इस सदन में लोग बैठे हैं, और आप जो है वो इतने बड़े मामले को खसकाना चाहते हैं। वो नहीं खसकेगा। मैंने आपके पास नोटिस दिया हुआ है, आपका नहीं, मैं मानता हूं आपकी मजबूरी है, सहन चर्चा तो होनी चाहिए, लेकिन अभी भी ये जोखम उठाए। क्या तमाशा मचा हुआ इस देश में? यानी दिन भर हमारी माँ बहन बेटी को नंगा करके दिखा रहे हैं, वहां ऐसे डांस दिखा रहे हैं कि देखते ही नहीं बनता। अजीब बात है। आप इस तरह का कैसे सरकार चलेगी? हमारी हो या आपकी हो। और आपकी पार्टी और ये बीजेपी के लोग ये बड़ा डरते हैं। क्यों डर रहे भाई? नहीं, सुनो मेरी बात, यह क्या नेता बनाएंगे? यह क्या नेता बनाएंगे? मैं आपसे, मेरी विनती है कि मनीष जी ये अंतर्राज्य और ये पिकअप और चूज केस नहीं करिए। सीधा है कि सारे मीडिया, सारे लोगों के ऊपर वो प्रेस काउंसिल जो है, या तो बंद करिए उसको, या फिर उसको दाद दीजिए, या इस सदन को दीजिए। और ये सारे पत्रकार एक भी नहीं इनको तनख्वाह दे रहे हो। ये क्षेत्रीय अखबार में अधिकांश उनको एक ढेला नहीं देती। अब उनसे कह रहे हैं कि जाके ऐड लाओ सब तरह से। ये मजबूर नहीं है, ऊपर बैठे हुए लोग, इनकी कोई गलती नहीं। ये एडिटर कौन बन रहे? ये मालिक है। ये क्या जानते हैं? ये अपने पत्रकार को तनख्वाह रखकर लिखवा रहे हैं एडिटोरियल अपने नाम से। तो ये इस पर कोई ना कोई करिए, और इस पर बड़ी बहस होना चाहिए। ठीक है, बहस के लिए आप नोटिस दीजिए। ये देश तबाही के कगार, ये देश तबाही के कगार पर। ये अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, उसको यहाँ दिखा रहे हैं, तमाशा किए हुए हैं। ठीक है, ठीक है। ऑनरेबल मिनिस्टर। मैडम स्पीकर, ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय है, और आप नोटिस भेजिए, इस पर चर्चा कराएं। इस विषय के ऊपर सदन में बहुत उत्तेजना है, तो आप अगर ठीक समझें, अगर समय मिल पाए, तो हम इस पूरे मामले के ऊपर विस्तृत चर्चा के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हम भी जो इन सब के ख्याल हैं, उस ख्याल से इत्तेफाक रखते हैं। पर जहां तक शरद यादव जी ने प्रेस काउंसिल की बात की, मैं शरद यादव जी की व्यक्तिगत तौर पे बहुत इज्जत करता हूं, पर मैं साफ तौर पे ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी के मन में इस तरह का कोई ख्याल है कि प्रेस काउंसिल के पास दांत नहीं है या प्रेस काउंसिल के पास अख्तियार नहीं है, तो वो जो ख्याल है, बहुत अदब और सत्कार से मैं कहता हूं, वो ठीक नहीं है। प्रेस काउंसिल ने पहले भी आपके कार्रवाई की है, पर जहां तक ब्रॉडकास्टिंग का सवाल है, माननीय अध्यक्षा जी, इस मुल्क में 852 चैनल है।
852 में से 400 चैनल न्यूज के हैं और इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि क्या जो सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जिसको पनपने का यूपीए की सरकार ने, जिसको फूलने फलने का यूपीए की सरकार ने पिछले 2 साल में मौका दिया है, क्या उसको और समय दिया जाए, क्या किसी तरह का रेगुलेटरी ढांचा तैयार किया जाए। और यहां तक प्रेस काउंसिल का सवाल है, क्या जो उसका अख्तियार है वो प्रिंट मीडिया तक रखा जाए कि उसका जो दायरा है वो बड़ा किया जाए। ये बहुत संगीन सवाल है, बहुत ही गंभीर सवाल है। और जैसे मैंने कहा कि जो मूलभूत भारत की संविधान में दिए हुए हमको हक है ये उनसे जुड़े हुए हैं, तो अगर आप अपने विवेक से ठीक समझे, सरकार इसके ऊपर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। जो भी सेंस ऑफ द हाउस होगा हम उस सेंस ऑफ द हाउस के साथ चलने के लिए तैयार हैं। Speaker, with your permission, I beg to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 8 of today's revised list of business. Thank you.